नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। आप जानते हैं कि ये सीरीज़ जो है, दूसरी सीरीज़ चल रही है, ये डेडिकेटेड है उन लोगों के नाम मनसूब है जो काम करते हैं और कभी काम का एक्नॉलेजमेंट नहीं सीख करते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि इनकी पूरी ज़िंदगी, इनका पूरा कैरियर जो है वो इनकी लैब्स में गुजरता है या लाइब्रेरीज़ में गुजरता है, रेफरेंस ढूंढते ढूंढते कि किस तरह दुनिया के जो मसाइल हैं ह्यूमैनिटी के, उनका हल ढूंढ लें। यही साइंटिस्ट की ज़िंदगी होती है और बहुत कम पब्लिक डिस्कोर्स में होते हैं, बहुत कम पब्लिक लाइफ में रहते हैं। तो आज के इस शुमारे में हमने दावत दी है डॉक्टर खालिद ज़फ़र मसूदी साहब को। हम इस वक्त सुकास्ट कश्मीर के एक क्लासरूम में ये टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शुरुआत इस बात से करेंगे, डॉक्टर साहब आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि एक कन्वेंशनल विजडम है, एक बुज़ुर्गों की बात है, जनरेशन से जनरेशन चली आ रही है। दो बातें हैं, एक ये कि एक कहते हैं कि कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन, ज़मीन के झगड़े हों तो ज़मीन पर ही हल किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है अलजबरा के बगैर कि अगर मसले हों सेहत के तो लोकल इश्यूज़ जो होंगे उनके लोकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मामला सिर्फ ये है कि ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं। हम डिप्रेशन ले लें, हम गैस्ट्रो इश्यूज़ लेंगे, हम ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ लेंगे। हर सोसाइटी एग्जिबिट करती है पिक्यूलियर मॉर्बिडिटीज़, और ऐसा भी मुमकिन है कि वो जो मसाइल हो वहाँ के पॉपुलेशन को, वो वहाँ के इकोसिस्टम की पैदावार हो, क्योंकि इंटरेक्शन तो वैसे से होता है। तो मान लीजिएगा हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, वो वैसे चैलेंज हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का है, वो कैंसर है। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर की वादी में, जो जहाँ अगर ये नंबर 1 पर नहीं है पूरी दुनिया की सोसाइटी में, तो कई मामलों में 2 पर है, 3 पर है, डिफरेंट कैंसर्स। तो क्या मुमकिन है कि क्या ये मुमकिन है कि इसके सोल्यूशन भी यहीं अवेलेबल हों? ऐसा मुमकिन है? मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ, मैं साइंस नहीं जानता। आप देखें, जो कैंसर्स अभी हैं सारे, कोई भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे हैं। तो 20% ऑफ दीज कैंसर्स आर जेनेटिक एंड 80% आर द वन दैट आर कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट। आप क्या खाते हैं, आपका माहौल कैसा है, रेडिएशन कैसी है, तो वो ये सारे कैंसर्स क्या है जो 80% है, दे मॉडिफाई और डीएनए, क्योंकि हमारा डीएनए का एक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, कौन से जीन एक्सप्रेस होने हैं, कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं होने हैं। अब जब म्यूटेशन हो गई, हमने ऐसे ग़िज़ा खाए, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, उसमें थैलेट्स हैं। अगर हम बताऊँ, थैलेट्स बाइंड्स विद एंडोक्राइन रिसेप्टर्स एंड ओवर एक्साइट देम कॉज कैंसर्स कॉल्ड एंडोक्राइन रिलेटेड कैंसर्स। या अगर मैं कहूँ आपसे कि हम जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो एक इंसान एक साल में अराउंड 150 पाउंड्स या से 60-68 kgs ऑफ प्रिजर्वेटिव्स खाता है। और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ किए जाते हैं, विद टाइम आप न्यूज़ में देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि भाई वो बैन हो गए। मार्केट में जा रहे हैं, भाई फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, एंड आई वाज अमेज्ड टू हियर दैट इट कंटेन्स एक्रिलामाइड। हम जब एक्रिलामाइड एक ऐसा केमिकल है दैट्स यूज्ड एज अ पॉलिमराइजिंग एजेंट, व्हेन वी यूज इट इन लैब वी वेयर ग्लव्स, वी वेयर लैब कोट, वी वेयर गॉगल्स, सो दैट कि अनपॉलिमराइज्ड एक्रिलामाइड हमारे में ना लगे, बिकॉज इट्स अ टॉक्सिन, इट इज अ कार्सिनोजन, बट दैट्स प्रेजेंट इन योर फ्रेंच फ्राइज। बहुत सारे you have ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं that are known to now cause cancer, that they have been banned. So 2016 में या आपके जो है ब्रेड में आपके यूज़ होते थे केमिकल्स to soften the bread. Yes. 2016 में इंडिया ने उसको बैन किया क्योंकि they know कि it causes cancer. तो we are eating these things. And so हमारा जो डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है, that is the main
thing that's responsible behind the diseases incidence जो बढ़ रहे हैं. डायबिटीज़ बढ़ रही है, लगभग हर एक फैमिली में एक डायबिटिक है. कैंसर्स बढ़ रहे हैं. आप देखेंगे हमारे चारों तरफ से, खुदा ना खास्ता देखें कि हमारी फैमिलीज़ में इतने सारे लोग हैं जिनको, माय फादर हैड प्रोस्टेट कैंसर. तो कितनी सारी बीमारियाँ, हाइपरटेंशन है, जो डिप्रेशन है, इतनी सारी जो है बीमारियाँ हैं. सो मेन कॉज इनका है कि हमारी फूड हैबिट्स है, ये चेंज हो रही है. जो फूड्स हम पहले खाया करते थे, वी यूज्ड टू हैव ग्रीन्स, ऐसे हाक खेवान, ऐसे खान खेवान, ऐसे लिस खेवान, नुनर खेवान. These have these good molecules that can help you prevention from these diseases. तो हमने खाना बंद किया. We want a pizza, we want a burger, we want French fries, we want Coke. So we don't want green tea. ऐसे जमा कहा हो, kind of green tea with honey. We want a Coke. We want Sprite. Chai. So these things have added benefits that we have proven scientifically to be correct. You suppose because we have to, science has to support. We have to have a strong scientific evidence before the things that we say. So with that evidence behind, I'm saying that we had so many good things in these, good molecules in these, anti-cancer molecules in these that prevented these things. But since our food habit changed, now there's high incidence of many disorders and diseases in this population. नाज़रीन, मैंने आपको बताया नहीं, डॉक्टर खालिद ज़फ़र मसूदी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी एक वसी शोबा है साइंस का, जिसमें आप किसी भी लाइफ के किसी भी तरफ जाएं, प्लांट की तरफ जाएं, वायरसेस की तरफ जाएं, आप बैक्टीरिया की तरफ जाएं, आप इंसान की तरफ जाएं, ये सब एक इस वर्टिकल में आ जाता है. और इंसान किसी टाइप की भी रिसर्च इसमें करता है. तो ये जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स होते हैं, दे आर ट्रेंड बेसिकली टू मैनेज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट रिसर्च एंड दैट आर एड्रेस इश्यूज. लेकिन इस पर इनके जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं और इनका जो इस वक्त का काम है, उस पर बात करने से पहले डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब की लर्निंग करो कैसे रही, आपकी तालीम कहाँ हुई, आपके चैलेंजेस क्या रहे और आपने कहाँ कहाँ पढ़ा एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट बनने से पहले, और दूसरों को वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो उनको ट्रेन करने से पहले आपका अपना सफ़र कैसा रहा? मैंने स्कूलिंग बर्नहाउस स्कूल से की, सोनवार से, फ्रॉम नर्सरी टू 10th. देन माय डैड वांट टू, माय डैड इज एन एलिग, सो ही वांट वहाँ का कल्चर और जो है तहजीब है, यू शुड हैव अ फील ऑफ दैट. सो 11th 12th आई डिड फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड देन आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम बॉटनी ऑनर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. फिर आपका JNU कंडक्ट करता है विद DBT, वो ऑल इंडिया टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है. सो आई क्वालिफाइड दैट, सो आई वाज गिवन जम्मू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सेंटर था बायोटेक्नोलॉजी का. आई डिड माय मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड PhD आल्सो इन बायोटेक्नोलॉजी. सो आई हैड दिस फर्स्ट, आई हैड DBT, BED, आई हैड नेट, आई हैड गेट. सो एक सारे टेस्ट क्वालिफाई किए थे. तो व्हेन आई वाज अबाउट टू फिनिश माय PhD, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया, वेयर आई डिड माय पोस्ट डॉक फॉर 4 years फ्रॉम 2010 to 2014. So then I came back in 2014. Actually, the reason behind my dad was not well. He was suffering from the same. I was working on prostate cancer in US for 4 years, and my dad. The irony is that my dad had prostate cancer. So I had to come here, get him treated. And alhamdulillah, he's fine. Okay now. Then I worked for around 6 months in SKIMS also as a senior resident, SKIMS Institute in Immunology and Molecular Medicine. And then I was recruited here in 2014, last day of 2014. लेकिन एक बात डॉक्टर साहब मैं पूछूंगा कि बेसिकली कश्मीर में कैरियर चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं. वो कैरियर चॉइसेस डिक्टेटेड बाय यूजुअली पेरेंट्स. यहाँ हमारे एक ट्रेडिशन रहा है कि पेरेंट जो कुछ नहीं कर पाया वो कोशिश करता है कि उसका बच्चा कर पाए. मतलब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ. तो हमारे यहाँ दो ही ऑप्शन हैं, या REC जाओ जो अब कहलाता है, या आप GMC जाओ. तो आप कैसे बच गए इन दो इंस्टीट्यूशंस में जाने से? नहीं, ये तो हमारा ये कल्चरली हम कहेंगे कि हमें ये चाहिए. तो माय एल्डर सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ वर्किंग इन SKIMS मेडिकल कॉलेज इन माइक्रोबायोलॉजी. सो शी वाज माय एल्डर, शी गॉट थ्रू दैट GMC थिंग, दैट NET. सो मेरे पर ज़्यादा प्रेशर था बीइंग द मिडिल वन, सो नेक्स्ट वन. सो आई डिड गिव लाइक कपल ऑफ times I did, but I didn't qualify that. I don't know, destiny had something else for me. Though
my younger brother, he did qualify the engineering, so he's an engineer. He's now located in Germany. He's a software engineer. So when once twice I gave this entrance, so I didn't qualify. So I thought, no, let's not waste time. To go for masters, go for your BSc. I had a thing for physics. I liked physics very much. लेकिन क्योंकि 11th 12th में मैंने choice ली थी medical, तो I couldn't go. You can have math and biology as well as physics. So वो options थे, means it was. So if you have biology, you have to have chemistry or. But then biological systems के साथ मेरा थोड़ा interest हुआ. BSc के दौरान ही मैं I used to do small experiments. We had good teachers at Aligarh. We have Dr. Shamuddin, very nice. Dr. Masoodi, they were really, they means carved us what is science actually. So means I wanted to do research when I was in my UG level, but since you cannot, so there are things, means आपका course एक curriculum है, so you have to follow that. But that scientific instance was there since very long. So when I came in biotechnology, I think that's the thing I was looking for. So you manipulate the DNA for the benefit of mankind, and you can play with DNA. And biotechnology is basically mathematics, and you don't have to remember anything. You just, it's like the concept that you can catch. So I like that thing about that biotechnology. So that's why I went for the entrance of common entrance test for biotechnology. We qualified, and then did my PhD at Jammu University. Worked on gene amplification technology. Gene amplification technology has a good role in cancer. Though I was not working on cancer, but I was working on black carrots, and we reconstructed the carotenoid biosynthetic pathway from genes from black carrot. So उसमें हमें एक molecule भी मिला, एक color changing molecule that changes color with pH. उसका हमने patent भी file किया. We made a smart gel out of it. It's a smart edible gel that changes color with change in pH. So it is you can use it in food industry, or you can use it in biological industries. So वहाँ पर एक हमने क्या किया? We tried to increase expression of carotenoid biosynthetic genes using amplification promoting sequence. मतलब हम gene का कॉपी नंबर ही बढ़ाते ताकि उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाए. बहुत सारे कैंसर ऐसे देखा गया, जैसे अर्लियर पीपल यूज टू ट्रीट कैंसर विद मीथोट्रेक्सेट ड्रग था दैट इनहिबिटेड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस. वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देता था, मगर हाउ कैंसर सेल यूज टू सैल्वेज इट्स सर्वाइवल, वो उसका कॉपी नंबर ही बढ़ाते थे, सो दैट ड्रग का जो डोज है दैट्स नॉट इफेक्टिव. सो दैट्स हाउ कैंसर सेल पेव्ड इट्स वे थ्रू दिस. सो उससे मेरे को थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि कैंसर बायोलॉजी is the thing that I should. डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जो आपका अपने PhD में जो काम किया आपने, वो क्या था, उसका फोकस क्या था? आपने थोड़ा इशारा तो दिया, लेकिन थोड़ा तफसीलन अगर आप बताते. PhD मैंने ब्लैक कैरेट पे काम किया है. एक्चुअली उस टाइम गोल्डन राइस 2 जो है वो बहुत इसमें था. पहले गोल्डन राइस 1 बना था जिसमें द राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन, एंड बीटा कैरोटीन जब हम खाते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन इन आवर स्टमक. सो उस राइस में इतना लेवल था कि यू हैव टू हैव मोर राइस, मतलब आप 200 ग्राम 250 ग्राम चावल खाएंगे, मगर अगर इतना, एंड यू हैव ओनली 1.6 माइक्रोग्राम्स पर केजी आई थिंक वाज द अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस 1 दैट इंक्रीज टू 23 फोल्ड इन गोल्डन राइस 2. सो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था हमारी लैब का कि वी काइंड ऑफ मेक अ गोल्डन राइस दैट हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड्स मोर देन गोल्डन राइस 2. तो उस पर हमने जब बहुत सारे सोर्सेज देखे, वी फाउंड ब्लैक कैरेट में एक तो एंथोसाइनिन भी होते हैं, और कुछ ब्लैक कैरेट्स में आपके बीटा कैरोटीनॉइड पाथवे भी बहुत अच्छा होता है. तो हमें कुछ ऐसे वेरिएंट्स मिले, तो फिर हमने वो सारे जीन जैसे फाइटोन सिंथेस, फाइटोन डीसाइचुरेस, लाइकोन बीटा साइक्लेस जीन हमने निकाले, क्लोन किए फिर इकोलाई में, एंड यू हैव इकोलाई दैट प्रोड्यूस दीज कैरोटीनॉइड्स. सो देन व्हाट वी डिड, वी पुट दिस एम्प्लीफिकेशन प्रमोटिंग सीक्वेंस अहेड ऑफ दिस जीन ताकि इसका कॉपी नंबर बढ़ जाए. हमने देखा कि इससे कैरोटीनॉइड लेवल्स बढ़ गए. तो मेरा काम उतना ही था, बिकॉज आफ्टर दैट आई मूव टू अनदर लैब इन यूएस फॉर पोस्ट डॉक. इन कैरोटीनॉइड्स and they are free radical scavengers. So they, if someone eats carrot juice, they have this good property of chelating in free radicals को वो quench करता है. तो free radicals are known to cause change in DNA, mutate DNA, or the changes that are deleterious to human health. तो उससे मेरा थोड़ा सा रुझान एंथोसाइनिन का रोल, कैरोटीनॉइड्स का रोल, एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल, या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उनका रोल जो है फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग में जो है, उससे मेरा रुझान दे इवेंचुअली कॉज कैंसर. तो थोड़ा सा उस पर गया. तो बट माय PhD वाज नॉट ऑन कैंसर बट ऑन कैरोटीनॉइड बायोसिंथेसिस. बाद में जब आप तशरीफ ले गए US की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ आपका पोस्ट डॉक में आपने किस चीज़ पर काम किया, एंड व्हाट वर द टेक अवेज? पोस्ट डॉक वाज वेरी एक्सटेंसिव. 4 साल मैंने किया वहाँ 2010
2010 2014 and जो है I was working on multiple projects. So my boss used to call me, you are a PCR. PCR is a machine that amplifies DNA, makes like 30 in say 2 hours 30 cycles, one copy की आपको लगभग 1 billion copies बन जाती है. So he used to call me, you are a PCR, you work like a PCR. So I worked on like 6 projects simultaneously, जिसमें हम जीन डिस्कवरी अगेंस्ट प्रोस्टेट कैंसर करते थे, ड्रग डिस्कवरी अगेंस्ट प्रोस्टेट कैंसर करते थे, या ऑलरेडी अवेलेबल थेरेपीज लाइक से एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी देते, किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है 2 साल तक देखा थेरेपी दी, फिर जो है पता चला 2 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर रिएक्टर हो गया एंड फिर जो है फिर अनक्योरेबल हो गया. तो हमने वो इंटरमिटेंट एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी पर थोड़ा काम किया. वो माइस मॉडल ऐसा था, तो उसमें हमें बड़े अच्छे रिजल्ट आए कि आप मतलब ट्रीटमेंट दे फिर उसको हटाएं, फिर ट्रीटमेंट दे फिर हटाएं, तो उससे बेटर वो था. तो वो प्रोसेस अभी क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है वहाँ यूएस में. इसके अलावा हमने स्क्रीनिंग करते थे अगेंस्ट कैंसर. सो कैंसर में जो प्रोस्टेट कैंसर में जो है द मेन जीन इन्वॉल्वड इज एंड्रोजन रिसेप्टर. दैट्स अ की प्लेयर इन प्रोस्टेट कैंसर प्रोग्रेशन. Main gene, and it's a transcription factor. So in normal prostate it has to be translocated in the cytoplasm. It binds with your DHT or testosterone. It's present in males. So when the ligand binds, it goes in the nucleus, and there it transactivates all the genes that are involved in prostate cancer progression, like Cal, reticulin, PSA जो आपका marker है, EF2, ALL2. These are all genes that are involved in cellular proliferation. तो लेकिन कैंसर सेल्स में क्या हो जाता है कि this gene what we call androgen independent nuclear localization of AR. This androgen receptor goes in the nucleus in absence of androgens. It stays there, is a transcription factor, keeps there with the DNA, binds to the DNA, stays there, and it goes on activating all those genes that are involved in cancer. So that's why the cancer cells जो है वो ग्रोथ में बढ़ जाती है. हमारा काम था कि हम ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढे that can abrogate this nuclear localization of AR and take it back in cytoplasm. So वहीं रखे, क्योंकि it keeps on shuttling inside and outside. So we screened around 250,000 molecules. High throughput screening थी. 250,000 molecules. तो high throughput screen मशीन में डाला तो you have results. So यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है. तो उसमें हमें 3 मॉलिक्यूल ऐसे मिले थे that could do that. और वो 2.5 लाख में से. हाँ, exactly. 250,000 में से 3 मॉलिक्यूल हमें मिले that could abrogate the signal. And फिर उसके हमने एनालॉग से बहुत सारे टेस्ट किए वगैरह बनाए, तो वो काम अभी लॉन्ग टर्म पे चल रहा है. Many of them were patented also. इसके अलावा हमने कैंसर्स में बहुत सारे जीन्स का रोल होता है, तो हम क्या करते थे, अगर किसी जीन का रोल देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नॉकआउट करते हैं. अगर वो एम्ब्रियोनिकली लीथल नहीं, कोई ऐसा जीन आप नॉकआउट कर दें कि वो फिर आदमी वो सिस्टम ही जिंदा ना रहे. तो माइस में हमने एक मॉडल बनाया क्रीलॉक सिस्टम से, जिससे हमने सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोस्टेट में एक EL2 जीन था. अगर हम वो पूरी बॉडी से नॉकआउट करते हैं उस जीन को, तो माइस एम्ब्रियोनिकली लीथल तो मर जाता था, तो हम इफेक्ट नहीं देख पाते थे. तो हमने उसको क्रीलॉक सिस्टम बनाकर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उस टिश्यू प्रोस्टेट से उसको जो है नॉकआउट कर दिया. तो फिर हमने देखा इट हैड इफेक्ट ऑन प्रोस्टेट कैंसर प्रोग्रेशन. EL2 जीन का नाम था. दैट स्टडी केम इन एंडोक्राइनोलॉजी. उसके अलावा DHX15 एक जीन था, वो हमने उसका स्टडी देखा. EF2 था, PABP1 था. बहुत सारे जीन्स जो हमने जो है नए जीन्स भी ऐसे जो है देखे जिनका रोल प्रोस्टेट कैंसर में था. तो टेक अवे यही मैसेज था कि रिसर्च एंड अनएंडिंग. कैंसर सेल्स आर स्मार्ट. If you try to treat them through one drug, they are smart enough to kind of mutate their DNA in such a way that they will kind of salvage their survival through a different pathway, जो prostate cancer में भी था. So these questions were unanswered कि how they survive, क्योंकि आप देखें कि आप कहते हैं मरीज को दवा तो बहुत सारी केसेस में इलाज नहीं होता है, तो patient eventually dies. तो this is because it remodels its chromatin, remodels gene, जो gene express नहीं हो रहे उनको express करा रहा है, जो express हो रहे उनको silent कर रहा है. तो हमने हर लेवल पर देखा कि how can we somehow control this menace, because prostate cancer is the second leading cause of cancer deaths in males in the US. इंडिया में metropolitan cities में बहुत ज़्यादा है. 10 साल पहले it was the 10th diagnosed cancer, now it's the 3rd in metropolitan cities. कश्मीर में भी इसके जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं. अच्छा, जब आप फाइनली पोस्ट डॉक के बाद सुकास्ट आ गए, बीच में थोड़ा सा टाइम आपने स्किम्स में भी दे दिया, लेकिन क्या आपने वो रिसर्च कंटिन्यू की जो आप वहाँ कर रहे थे? Yes, it was challenging for me having a cancer background, but eventually we see कि all this research should translate into the well-being of the society or human beings eventually. You cannot just do science, publish a paper and keep, or do a patent and keep that patent on your shelf and that's it. No, the research should be translatable. So that's why we have the research we do is interdisciplinary, is transdisciplinary and is translational. So when I came here, I saw that
we have a good system now जो हम कर सकते हैं, and we have a huge repertoire of medicinal plants in Kashmir Valley. Around 3,000 से ज़्यादा molecules endogenous to Kashmir Valley है, बाहर नहीं पाए जाते हैं. 3,000 है ये जो हमारे हैं, बिल्कुल 3,000 something, 3,050 something. And जो है लद्दाख में कुछ 800 something in Ladakh and some 900 something in Jammu. So I thought, why not use the same technology? Because I know that all the drugs that are in market, 60% are plant-based, either plant-based directly molecules or their derivatives. I thought we have a huge repertoire, why not use that? So we got our hands on around 400 medicinal plants and underutilized crops. And we made a library of around say 20-25,000 extracts, because we didn't want to miss anything. So हमने क्या किया, हमने जो plant का हर एक जो है we use sequential extraction using different solvent systems. 6 solvent systems हम use करते थे ताकि polar molecules भी आपके आए, non-polar molecules we don't miss something. तो we had around a library of around 20-25,000 extracts. उनको फिर हमने इसी principle हमने किया. We green fluorescence tagged over AR and C4 saline हमने मेरी पुरानी लैब थी उसे हमने यूएस से मंगाया, बिकॉज एनसीएस पूना अगर हमें कोई सैलाइन ज़रूरत होती है वही प्रोक्योर एनसीएस पूना, बट वो अवेलेबल नहीं थी वहाँ. तो माई एक्स बॉस वाज काइंड इनफ टू प्रोवाइड दैट. तो उसमें हमने ट्रांसफर किया. फिर हमने अपने 96 वेल में आहिस्ता आहिस्ता, नॉट दैट हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग विद दैट यू कैन डू इन लाइक 1 वीक और लाइक फ्यू डेज. सो 96 वेल में हमने डालकर हमने एक एक्सट्रैक्ट को स्क्रीन किया, एंड alhamdulillah we were able to find 16 extracts from 16 different medicinal plants that could target androgen receptor. So I was so excited. And then, so this is not only test, so then you have to go for proliferant assay, wound assay, and then you have to test your molecules in mice, do for cytotox analysis. And we have around 2 of the molecules that we narrowed down to are very good. And I will say that they are novel, so they are not been used against cancer earlier. So we have filed the patent. We have filed around 8 patents in the last 3 years. So this also we have filed recently. And one of the molecules was from an edible source. So I'll not name it here. The SCOS has the patent on that. So edible source, Kashmir population has been eating it. And when you go in see that, okay, the edible that you see that recommended daily allowance already 10 grams hai. So we thought, okay, why not make a food out of it? So we designed a magic food out of that herb, safe, and easily available. It's available at cost. So we are trying to kind of do this translation in which we can give actual products. So our research should end up in something productive for the population. And in the process, Kashmir University of Agriculture Science and Technology is the first farm university to implement National Education Policy 2020. And uske tahat the faculty can also be have a startup. So I thought with my 2 students, I told them, okay, we'll have a startup with the name of Kashmir Biotech Private Limited, and it has been registered with DPIIT, and we got some funds also for that from DST for this innovation, and we have commercialized this technology. It is not the only technology we have commercialized. We have maybe 2-3 products that are coming, and 2-3 products that we have right now that we have commercialized. जब हम बड़े इंस्टीट्यूशनल से पढ़ के आते हैं, रिसर्च प्रैक्टिसेस करके आते हैं, तो एक तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको थोड़ा उसमें ट्रेन किया जाए. एक तो ये होता है. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई हॉपकिंस से आया, कोई हार्वर्ड से आया, कोई ऑक्सफोर्ड से आया, वो यहाँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इशू रहता है. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हाउ यू मैनेज द बैलेंस, कि एक तो ये कि आपने जो सीखा वो आपको सिखाना है नेक्स्ट जनरेशन जो आपके क्लासरूम में है, और दूसरा ये कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स थे, how you manage it and balance it, or if at all is it in practice? This is the very valid question and right question you have asked. We do face, the people who come from abroad, they do face, because when you see the state of art labs in US and when you compare the labs here, they are no match. So, but I had this in mind that, okay, no, I have to set up the same thing we had there. So luckily, I applied for some grant, and SERB DST gave me one early career research award of around 49-50 lakh rupees, from which I was able to set up a cell culture facility.
And then also I have another project on apple that was also by SERB, around 60 lakh rupees. That's a different aspect of our research. We are trying to find new, because biotechnology is interdisciplinary, transdisciplinary. We play with the DNA चाहे बैक्टीरिया का हो, एप्पल का हो या कैंसर सेल का हो, we tinker with it. So Alhamdulillah, we were able to set up state-of-art अपने labs. देखिए अभी you can have a tour. So we have state-of-art labs. We have good research papers, where papers published from this lab in scientific reports, in molecular cancer therapeutics, endocrinology, so big journals, good journals. And even my master students have papers like in high impact papers, or they have a patent. So I just said we filed around eight patents, and the patents are a result of the research of my PhD and master students. So with these funding, I understand you have funding, it's very difficult. So with these fundings, we were able to set up a good lab in which we can work. And our lab is almost, alhamdulillah, complete, has almost every equipment that are in a good lab. And we do quality research. That's the main thing. Though the space is a constraint, but yeah, that was never an impediment in working. So alhamdulillah, with these external funding projects, we were able to set up a good lab that is workable, a workable model. And can do some good quality research. डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा मूवर शेकर जो पेरिफेरल इकोनॉमी का है वो एप्पल है. तो एप्पल में जो हमारा सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो डिजीज़ है, और डिजीज़ को मैनेज करने के लिए हम जो कर रहे हैं वो बजाय खुद एक डिजीज़ है. तो व्हाट इज़ द वे आउट? बिल्कुल. तो कुछ काम किया आपने इस पर? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, इस interdisciplinary subject we capture the needs of almost all the, like we have fruit science, which we do vegetable science, fruit science, entomology research. We have identified some new viruses that can be used as biocontrols. We have identified some new six new wilt causing pathogens my students have discovered that were not known to cause wilt earlier. In Apple also, we had one project funded by SERB, and has been one of the major focus of my labs. So we know that scab it causes around 30 to 40% loss annually, and then to prevent that, use around 325 crore rupees of fungitoxicants. Eventually these fungitoxicants go into the water, go in the soil, and eventually land. We are the end product of those land in our bodies, and that's why there is incidence of these diseases, because this is also one of the effects. You see the population that are living besides apple orchards, you can see the incidence of diseases are more in them because of these fungicides and pesticides. So I don't want to go in that detail, but it's a menace. So I thought that, okay, so we had these good varieties, traditional varieties, but that are not economically viable. Like you have Maharaji here, you have wild type apples no one will try to eat because they are so hard. But they don't come to scab. Yes. Okay. So, Amri hai. Yes, Amri hai, but it does scab. It does. Scab hota hai usme, but it's an indigenous variety. So what we did a comparative transcriptome, RNA-seq जिसको हम बोलते हैं. It's a high throughput RNA sequencing in which we see the expressed genes कि scab resistant में कौन से express हो रहे हैं, scab susceptible में कौन से express हो रहे हैं, so that we can find some comparative transcriptomics से कि क्या हमें ऐसे जीन मिलते हैं that are involved in scab resistance. We found that the wild type apple variety and the Maharaji have genes that are not expressed in your susceptible varieties. So we thought if we somehow can transfer these genes to the susceptible varieties, we can have scab-resistant apple. So normal breeding में क्या होता है, the apple variety that you eat, so they have come through thousands of years of breeding programs. So wild types से आपको जो इतनी सारी varieties है कि if you eat one apple a day, for 20 years you will keep eating a new variety of apple every day. So many varieties of apple. So we call genotypes in our language. हमारे एक process जिसको बोलते हैं cisgenesis. Now we have identified some new genes that are involved in scab resistance. Already known genes जो थे जैसे RVI6, RVI12 है, the apple varieties जो उनसे बनाई गई, they are now succumbing to scab. So they are effective क्योंकि the pathogen is evolved. The Venturaria unicalis, that's the pathogen that causes the scab, वो evolve हो रहा है. So they are no longer able to provide durable resistance. So this was the main reason we thought we should have some genes there. So we were able to identify genes. So this paper recently came in Functional Integrated Genome, in which we identified new genes that are involved in imparting scab resistance. So now there will be two aspects. One will be that through breeding program we'll try to incorporate these genes, and through cisgenesis we are trying to incorporate these genes in your susceptible varieties so that you can have an apple variety that is scab resistant. और जो 30 से 40% का loss annually एक apple grower को होता है वो ना. You briefly mentioned this department has actually located and identified some new fungus
which were not earlier part of this literature anywhere? Yes, fungus were there, but not known to cause wilt. What means, जैसे we one of my master students did research on chili wilt. It causes like 2 to 80% loss all over India in chilies. So this is called by Fusarium oxysporum mainly, and in Kashmir it was known that Fusarium oxysporum and Palandarosham are the 2 fungus that cause this wilt. But we found that there is a new fungus, Fusarium equiseti, that causes wilt. It was known to cause wilt in other crops, papaya or some, but chilies में नहीं known था. This is the first report in which. So when we found that, we thought, okay, let's look at the bigger picture. We have so many solanaceous crops. We have tomato, we have capsicum, we have brinjal. Why not look into this, what's happening there also? And we screened them, and we found 6 new wilt-causing pathogens in these also. So these studies came out in scientific reports. So one of my PhD students continued this bigger study, and were able to identify 6 new pathogens that cause wilt in chilies, brinjal, and tomato. डॉक्टर साहब, इस नॉलेज कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त पूरी बायोटेक्नोलॉजी में, इनफैक्ट कंप्लीट लाइफ साइंसेस में जो सबसे बड़ी हैपनिंग चीज़ है वो जीन एडिटिंग है. सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त सिर्फ Cas9. तो इज़ देयर सम हेडवे कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ हो जाए? And have there been some kind of researches कि इसके जो there is flip side of it as well. ऐसी बात भी नहीं है कि सिर्फ की डोरी है, पूरा गुड़ी गुड़ी है. तो have there been some kind of interventions कि इसका जो negative side है उसको मैनेज करने के लिए, to perfect it? Yes, there has been always a negative side. Means if you are a biotechnologist, you have an environmental scientist that's standing against you there. So okay, no, this is not allowed. There's a debate going on between exactly, non-GM. But I am a biotechnologist. I strongly advocate that by 2050 you will be touching 10 billion population, around 9.7 or some 10 billion populations. So if the conventional breeding methods are there for gene transfer to produce high-yielding crops that are not sufficient to provide food for the 10 billion population. So you have any time you will have to switch to GM crops for feeding the population, this alarmingly large population. Now the concern is that, for example, in this case we are transferring a scab resistant gene to and when we transfer it, how do we know that it's transferred? So we have an antibiotic resistance gene with it. So when we grow the cell, we grow it on that antibiotic, and then only those plants will grow that will have that antibiotic gene, and with that antibiotic gene you have your gene, say for example scab resistant gene. So this there to know. So now the people are saying, okay, so this antibiotic gene is there, it'll go, it'll have some horizontal transfer, vertical transfer, it'll go and produce drug resistance, फिर से वो एक Pandora box खुलेगा बीमारियों का. So we have CRISPR-Cas9 has a cure, or we call recombinase based excision repair, जो हम अपनी टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं. Now we are also using CRISPR-Cas9. तो हमें इसमें इस एंटीबायोटिक मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम सिर्फ जीन उठाकर इसको हम डालेंगे, फिर वो एंटीबायोटिक रिकम्बिनेज बेस सिस्टम से, रिकम्बिनेज बेस एक्सिड रिपेयर और CRISPR-Cas9 से हम वो जीन जो है एंटीबॉडी निकाल देंगे. तो यू विल हैव अ प्योर जीन इंसर्टेड इन अ सस्टेनेबल वैरायटी, जो जैसे ब्रीडिंग से होता है, जो ब्रीडिंग आप खा रहे तो अलाउड है, मतलब मीन्स. बट फॉर GM फूड देयर इज दिस कि भाई एंटीबायोटिक जीन आ गया. मगर द गुड थिंग इज दैट वी हैव अ टेक्नोलॉजी नाउ दैट कैन रिमूव दिस. सो नाउ यू हैव अ प्योर, ओनली द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज देयर एंड नो एंटीबायोटिक. एंड सो जो कंसर्न है बाकी का GM फ्रूट्स में जो इश्यूज है वो नहीं होंगे. खैर, ये तो उस एथिकल डिबेट का एक हिस्सा है जो ऑलरेडी चल रहा है कि वेदर वी शुड इंटरवीन इन नेचर और नॉट. कि अगर नेचर ने कोई फ्रूट बनाया है तो हम इसकी क्वालिटीज़ को इंटरप्ट करें. तो एक लंबी बहस से आप देखते हैं क्या होता है. तो डॉक्टर साहब, आपने हमको इतना वक्त दिया, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की अपने कैरियर के हवाले से, अपने रिसर्च के हवाले से, एक उम्मीद आपने हमको दे दी. एक उम्मीद इस बात की कि अगर हम कश्मीर के ट्रेडिशनल वैराइटीज़ जो फॉर इंस्टेंस एप्पल में है, महाराजी हो या कुछ और वैराइटीज़ हों, अगर हम उनमें जो कायनात ने, कुदरत ने जो चीज़ें छुपा रखी हैं जीन्स में, तो थोड़े से कुछ जीन उठा के अब अगर डिलीशियस में, गोल्डन डिलीशियस में, अम्बरी में, या बाकी जो अब हाई डेंसिटी में इतने सारे बहुत सारे वैराइटीज़ आ गई हैं,
तो अगर हम किसी तरह से इनका ब्रीडिंग कर लेंगे तो मुमकिन है कि हम स्कैब से किसी हद तक निजात पाएंगे। ये फिर कायनात का फैसला होगा कि जब हम स्कैब को मैनेज करेंगे तो कौन सी नई आफत सामने आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू। और उम्मीद करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट से, आपकी लैब से कोई अच्छी सी जिसकी बिल्कुल उम्मीद भी है और इंतज़ार भी है, एक अच्छी रिसर्च हो, किसी बड़ी जर्नल में छप जाए और हमें बहाना मिल जाए आपको एक बार फिर तकलीफ। करीब इंशाल्लाह। शुक्रिया सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।